Hello everyone. On behalf of Mental Knowledge Management Private Limited, I Twinkle Patel, Senior Career Counselor, welcome you all for today's webinar. So today's webinar is going to be on the topic multiple intelligence. We usually understand intelligence in solidarity, but it is in fact very dynamic in its nature. अब तक हम इंटेलिजेंस को काफी नैरो सेंस में समझते आ रहे हैं. So there is a need to understand intelligence in a very broad perspective. All of us are smart in some or the other way. हम सभी के पास कुछ ना कुछ यूनिक स्किल सेट्स होती है जिनमें हम बाकी लोगों से अच्छे होते हैं. So smartness is a very distinctive term जिनमें सब्जेक्टिविटी काफी होती है. हम सभी we are smart in our own way. So every child has one trait which makes them different and unique from others. क्लास में हमेशा कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो बाकी लोगों से काफी अलग रहता है. So even if as parents अगर we have two children या दो siblings है, one of the sibling can be very good at maths and the other sibling can be very good in extracurricular activities. So uniqueness is very finely infused in our existence. So hence every child has one trait which makes them different and unique from others. Now before we go ahead, what do you understand by the word multiple intelligence? Right? So ये question काफी it's very detailed. So before we go into the detailed question of what multiple intelligence is, I think it is important that we talk about the term intelligence first. Intelligence आखिर है क्या? तो अगर मैं इसे काफी simplistic way में present करने जाऊं, so it is defined as our ability to solve problems as human beings. हम में कितनी क्षमता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सो दैट इज इंटेलिजेंस. अगर इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा और इंक्रीज करूं और इसे होलिस्टिक बनाऊं, so intelligence would be defined as our ability to solve problems in a particular cultural or community setting. तो हमारी इंटेलिजेंस, हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारी सिचुएशन हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, that is considered as our intelligence. So now that we have understood कि intelligence आखिर होता क्या है, तो multiple intelligence का क्या मतलब होता है? So the multiple intelligence theory was given by a very famous psychologist named as Gardner. So abhi a lot of people would be walking in during the webinar as well. So I welcome you all, and please feel free to drop in any question in the chat box given below. I'd be looking through them and I'll be answering at the end. So now multiple intelligence has a lot of different, it's actually different ways students learn and acquire information. These multiple intelligence range from the use of words, numbers, pictures, and music to the importance of social interactions, introspection, physical movement, and being in tune with nature. ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये actually this is the entire summary of what we are going to learn today and what we are going to pay attention to. So ये सारी चीजें हम काफी ज्यादा डिटेल में हम आगे हमारे इस वेबिनार में समझेंगे. So accordingly, an understanding of which type of intelligence a student possess is very essential. So अब तक तो हम समझ गए हैं कि इंटेलिजेंस को हम अभी तक काफी एक तरफा समझ रहे थे. So now we need to understand कि इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. So अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि हमारे बच्चों में कौन सा इंटेलिजेंस टाइप सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, हम हमारे बच्चों को ज्यादा हेल्प कर पाएंगे इवन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ. So why is
it important that you should know about your child's multiple intelligence? आपके लिए ये जरूरी क्यों है कि आप अपने बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानें? So as parents, we can get closer to our child by identifying their natural intelligence at an early age. जब हम ये जान पाएंगे कि हमारे बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटीज या सबसे ज्यादा लर्निंग या इंटेलिजेंस कौन सी एरिया में डेवलप्ड है, हमारा कनेक्शन उनसे बेटर बैठ पाएगा, हम उन्हें और अच्छे से समझ पाएंगे और इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. सो आज की डेट में व्हाट एन एलिमेंट जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में मिसिंग है, दैट इज द फैक्टर ऑफ इन्वॉल्वमेंट और द फैक्टर ऑफ कनेक्शन. या तो पेरेंट्स काफी बिजी होते हैं या तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते अपने बच्चों के साथ कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है. अब एज पेरेंट्स इफ वी वांट कि हम मेक श्योर करें दैट वी रीड न्यूज़पेपर विद आवर चिल्ड्रन एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, they are going to retaliate, they are not going to be interested in reading with you. अगर वो if they are highly inclined towards music and अगर आप make sure करें कि they are learning something in a very musical way जहाँ पे music involved है, वहाँ पे आपका connection बहुत better हो पाएगा. So hence it becomes very important to identify कि आपका connection आपके बच्चों के साथ कहाँ पर सबसे ज़्यादा best fit होगा. So each individual has some elements of multiple intelligence. Everyone can possess one or more than one type of intelligence, according to Gardner's multiple intelligence theory. So Gardner ने various type के multiple intelligence theories के बारे में हमें बताया है. So अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं जो उन मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप को और एनहांस कर सकता है. तो ये सारी चीजें अभी हम इन डिटेल देखेंगे. सो नाउ लेट्स लुक इनटू द 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस. As I mentioned, अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन हो, so feel free to drop into the comment box. I will definitely look into it and I would love to answer your question. Right? So सबसे पहला है visual and spatial intelligence. So these students, जिन बच्चों में visual and spatial intelligence काफी ज्यादा developed होता है, they are very good at visualizing. उनको रास्ते काफी ज्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं, उनको डायरेक्शंस काफी जल्दी याद होता है और वो वीडियोस और पिक्चर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं. उनकी जो मेमोरी पावर होती है, द फोटोग्राफिक, उनको पिक्चर्स भी काफी ज्यादा अच्छे याद रहेंगे. सो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बचपन में अगर किसी से मिले होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये मेरे चाचा है, मैं इनसे पहले मिला था. सो these kids are very good with visual and spatial intelligence. So इनके लिए कुछ टेक्निक्स टू डेवलप विजुअल एंड स्पैशियल इंटेलिजेंस वुड बी, ये बहुत ज़्यादा नोट्स बनाते वक्त कलर यूज कर सकते हैं. दे कैन यूज कलर पेंसिल्स एंड दे कैन यूज अ लॉट ऑफ इमेजेस. जब भी आप उनको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस. जब आप इमेजेस यूज कर रहे हैं तो वो उनकी मेमोरी पावर में ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्यूज हो रहा है. So for them, potential career options would be architect, artist or engineer. ये सारे career options है that can be very prominently successful for them. Next would be verbal linguistic intelligence. So जिन बच्चों में verbal and linguistic intelligence काफी ज्यादा अच्छा होता है, they have the ability to use words, language both in speaking and writing. अगर हम वर्बल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने जाएं, सो देयर आर 4 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. इन चारों में उनका कमांड काफी ज्यादा हाई होता है और वो इन चारों चीजों में अपना इंटरेस्ट काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. तो इन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन वर्बल एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इनके लिए कुछ टेक्निक्स होंगे दैट दे कैन रिसाइट द इंफॉर्मेशन. ये जोर जोर से बोलकर चीजें याद रख सकते हैं. दे कैन ऑल्सो राइट डिबेट्स. ये डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे कैन रीड एंड समराइज नोट्स एज वेल. सो इनके लिए पोटेंशियल करियर ऑप्शंस जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल या फ्रूटफुल होंगे इनके लिए वुड बी जर्नलिज्म, लॉयर, टीचर एंड राइटर.
ये सारे जो करियर ऑप्शंस है ये वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएंगे. So these are the career options which will be best fit for them. Next would be logical and mathematical intelligence. So these students are very good at reasoning. ये patterns भी काफी जल्दी recognize कर लेते हैं और ये logically बहुत ही ज्यादा smart होते हैं. इनका सबसे ज्यादा best point होता है maths and science. और इनके सबसे अच्छी टेक्निक्स जिनसे ये अपनी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं वुड बी दे कैन एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन के साथ खेलना जानते हैं. सो इनके लिए पोटेंशियल बेस्ट करियर ऑप्शन वुड बी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट. ये सारी जो चीजें हैं, if they make a career in these professions, they would definitely excel in it. Next would be bodily kinesthetic intelligence. So ये जो बच्चे होते हैं, they are very good with body movement, ये performing arts, ये अपने आप को express करना through body movements, they are very good at it. And they have very good physical control as well. इनका eye hand coordination भी काफी ज्यादा अच्छा होता है. सो इनका सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन. एंड इनके लिए सबसे बेटर और या पोटेंशियल करियर ऑप्शंस रहेंगे डांसर, बिल्डर, स्कल्पचर एंड एक्टर, जहाँ पे दे आर वेरी वेल इन ट्यून्ड विद देयर बॉडी एंड विद देयर ब्रेन. सो इनका जो ब्रेन और इनका जो काइनेस्थेटिक जो बॉडीली रिएक्शंस होता है, दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड. सो अगर वो इस चीज को अपने एडवांटेज में ले एंड इफ दे इन्फ्यूज दिस क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस व्हाइल मेकिंग अ करियर डिसीजन, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ वेरी फ्रूटफुल वे फॉर देम. Okay, so I'm getting one question by Mr. Nanda. He wants to know that his child is loves dancing. So would it come into bodily kinesthetic intelligence? Yes, because dancing is also a form of expression. वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है and if he loves doing it, he is definitely someone who is bodily kinesthetic. उसका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई है. सो अगर आप उस चीज को और डेवलप करवाना चाहते हैं, सो यू कैन मेक श्योर दैट ही गोज टू डांस क्लासेस और वो ऐसी जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है जहाँ पे उसका वो एक्सप्रेशन, द बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इनहांस हो रहा है. Right? So next would be musical intelligence. Now these students or these children are very good in thinking in patterns. ये patterns काफी जल्दी recognize कर लेते हैं और इनका rhythms and sound ये music से काफी ज्यादा attuned रहते हैं. Right? So students या children who are very good in musical intelligence, ये काफी ज्यादा we would see that they prefer writing songs, rap and study material also. They would अगर वो पढ़ भी रहे हैं या याद भी रख रहे हैं तो उनके पैर थिरथिराते रहेंगे. And these are the elements where we can see कि इनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो काफी ज्यादा हाई है. इनके लिए पोटेंशियल करियर चॉइसेस वुड बी म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक टीचर. सो wherever they are related to the field of music industry or music element जहाँ पे infused होगा, they are going to have a very successful career. Next would be interpersonal intelligence. Now inter मतलब आपसी, एक दूसरे के साथ. So it deals with people, with one another. They are very good at understanding and interacting with people. So इनका जो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होगा वो सबसे एक पहला होगा सोशल एक्टिविटी एंड दूसरा टीम वर्क. ये सबसे ज्यादा फ्लरिश इन दो एरियाज में करते हैं. Now, if we want our children to enhance their interpersonal intelligence, there are two main ways. The first thing, discussion. The second thing would be group study. So during this quarantine period of time as well, अगर आप चाहते हैं that you want to enhance your child's interpersonal intelligence, आप न्यूज देखने के बाद उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि उसका टेक उस न्यूज को लेकर क्या था, व्हाट डिड ही इन्फर, या पूरे दिन में या पूरे महीने में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो न्यूज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट थी. A very healthy discussion
can really enhance your child's interpersonal intelligence, और उसे अभी से ही, like even from today, there'll be a very strong base establishment. इनके लिए potential career choices would be psychologist, philosopher, counselor, salesperson, and politician. So these are the areas जहाँ पे they would perform really well. And next would be intrapersonal intelligence. They're good at being aware of their own emotional states, feelings, and motivations. ये खुद को बहुत अच्छा समझ पाते हैं, what they are going through. Otherwise, even as adults, हमें ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि हम क्या चाहते हैं. बट जिन बच्चों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई होती है, दीज आर वेरी रेयर क्वालिटीज. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी रेयर इंटेलिजेंस, क्योंकि इवन एज अडल्ट्स वी फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, राइट. सो इनमें सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है दैट दे आर वेरी इंडिपेंडेंट. They don't need other person, a guide or a motivator to help them understand them, because they are very self-sufficient in their nature. इनके लिए potential best career choices would be philosopher, writer, theorist, and scientist. If they pick a career or a profession from these professions, they are definitely going to succeed in it. Now, the next is naturalistic intelligence. Now, these students are more in tune with nature and often are interested in nurturing, exploring the environment, and learning about other species. Now, they're very well connected with nature. इनके लिए सबसे ज़्यादा best 2 points रहेंगे that they are very connected to nature and the ecosystem. Now, to develop the naturalistic intelligence in them, so we can suggest them to break down the information. अगर ये categories में चीजें याद रखते हैं, तो it is going to be very beneficial for them. For example, अगर ये पढ़ रहे हैं animals के बारे में, and if they are studying about herbivore and carnivore, अगर मैंने 2 काफी separate category में अगर उन्हें demonstrate करके सिखाते हैं, so they will retain in a much better way. And also these students are benefited if they study in natural light. अगर ये natural light में अपनी पढ़ाई करते हैं, तो इन्हें काफी ज्यादा enjoy, they enjoy more, and they are able to, you know, sit for or concentrate for longer hours. Potential career choices for children who have high naturalistic intelligence would be biologist, gardener, or farmer. So they can pick from any of these career options. Now, we talked about the 8 types of multiple intelligence. Now, how can parents nurture and support the MI in their children? अभी जानने के बाद कि multiple intelligence के types क्या है, उनमें क्या होता है, और कौन से potential career options है. Now we would look at how parents nurture and support the MI in kids. So number 1, spending time with kids and see what they really like. So it is very important that, the only way we'll be able to keep up with their interest if we spend time with them. If we, उनके साथ dinner के time पे बात करना, and see what they did the entire day and play games with them, वहाँ पे हम खुद ही as parents will be able to identify कि वो किन चीजों में ज़्यादा enjoy कर रहे हैं. Second would be valuing a child's strength instead of looking what they cannot do. Now this is a mistake that we make as parents. वो हो ही जाता है हमसे, just because we are so concerned and worried about our child कि ये लिखने में अच्छा नहीं है, अभी तक नंबर 9 उल्टा लिख रहा है, या अभी तक he is not able to read very fluently. ये सारी चीजें जो as parents हम करते ही हैं, but to make sure that we are also looking as positive side is also very important. अगर हो सकता है कि उसने वो अभी तक fluently नहीं पढ़ पा रहा है, that is okay. वो धीरे धीरे we have to work in how to make that better. But if he is dancing really well, and if अगर उसका bodily kinesthetic intelligence काफी ज़्यादा high है, तो we have to also appreciate that part of it. We also have to make sure कि हम उसके उस वाले इंटरेस्ट एरिया में भी हमारा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं. The third would be engage your child in different ways.
So for example, if your child is learning about plants, और अगर वो उससे नहीं समझ आ रहा है, he is not able to understand आप जो उन्हें समझा रहे हैं, so आप उसे बाहर लेकर जा सकते हैं, आप उसे गार्डन में लेकर जाइए, show him the plants, show him a sapling. So इस तरीके से, so this is a way that you are engaging your child in different way. एक ही चीज को समझाने के आप बाकी तरीके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. Fourth one would be look at the value of other intelligences. Now, जब हम multiple intelligence की बात करते हैं, so we have to make sure कि वो किसी एक कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, उसके पास सिर्फ एक टाइप का इंटेलिजेंस डेवलप हो. इट इज नॉट लाइक दैट. मल्टीपल इंटेलिजेंस का इंटायर आइडिया इज दैट कुछ चीजें ज्यादा डेवलप्ड होगी इन टर्म्स ऑफ अदर, इन रिलेशन टू अदर मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप्स. तो हमें दूसरे इंटेलिजेंस टाइप को भी ध्यान में रखना है, सो दैट there can be a combination of two, there can be a combination of one. काफी चीजें इंटरलिंक्ड है, काफी चीजें इंडिपेंडेंट भी है. So we have to make sure that हम सिर्फ ऐसा नहीं है that if the child is better, if best in numerical verbal numerical intelligence, तो हम बाकी सारे types of intelligence को ignore कर देंगे. We have to make sure that we work in terms of कि वो कौन से प्रेफरेंस में आ रहा है और दो तीन चीजों को साथ में लेकर चले. Now, how will it help the teachers to create better lesson plan for them? हमने अभी तक ये देखा कि पेरेंट्स को किस तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप वुड हेल्प टू गेट टू एस्टैब्लिश बेटर कनेक्शन विद देम. नाउ वी वुड सी दैट टीचर्स को किस तरीके से हेल्प करेगा इफ दे आर अवेयर अबाउट द मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स. Number one, more to consider when evaluating students, how students learn and how will it benefit them. So ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. So as teachers, अगर for example if the student is best at verbal ability, verbal and linguistic ability, तो we'll have to make sure कि हम उसे उस तरीके का environment provide कर रहे हैं. So what we can do is that we can identify all the students from a class who fall under who have the highest developed qualities for verbal intelligence. We can make sure that we give them or assign them the lesson plans accordingly. Second would be more to consider when planning effective curriculum based on lessons, just how I mentioned it earlier, how curriculum matches with students with their learning. So सबसे ज़्यादा when we talk about intelligence, and the other thing that comes up automatically is learning. Intelligence का phenomena learning के साथ काफी ज़्यादा match करता है, क्योंकि if there is the concept of intelligence, अगर constant learning नहीं है, continuous learning नहीं है, there will be no scope for further development. Hence, it becomes very important to consider that the curriculum is matching and is in benefit for the student in terms of their learning. The third would be helps teacher to think about their own learning process. So we through the method of multiple intelligence also, the teachers can develop a plan wherein they can track the learning procedure कि उनको students को किस तरीके से benefit हो रहा है, and they can make a separate and segregated track record. Fourth would be gives teachers a greater understanding of student learning, just as I mentioned before, that this would also establish a very good learning environment within the students, and automatically अगर वो enjoy कर रहे हैं इस चीज को, so the learning is automatically going to shoot up. So as we look now, understanding MI can help teachers and parents not only by giving the kids a richer learning experience, but also helps in making learning more fun and rewarding for them. Because at this young age, we are not only like making sure that they are learning, but also that their interest is maintained and they are enjoying it. Right? So multiple intelligence affects us in each dimension. It can be spiritual, emotional, occupational, social, and physical.
Hence, it is important we know our child's most developed intelligence that can help us in identifying the activities in which they can be productive, feel happy about, and also help others, and eventually fit in their best suited social roles. So now, how can we know about our child's multiple intelligence? Let's look into it through a live demonstration. Now, now we will look at how you can know about your child's multiple intelligence. No, I'd be now just showing you that how you can do it. So yeah, so all you have to do is that you have to go to the open your URL, right, and write together mentor.com, and once you click on it, आपके पास कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा. So you have to go into the first category, that is second to seventh, nurturing minds. When you click this test will tell you about your child's multiple intelligence. So we will go into the view more section, right? And then what we have to do is that we have to sign in first. We have to sign up first. सबसे पहले हम sign up करेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे we will have to register ourselves first. So आप अपने जो child है उनका नाम लिख सकते हैं. For example, we are going to write here Varun, right? We can put your email ID. आप अपनी email ID डाल सकते हैं. So I'm just let's assume Deena is the name @gmail.com. Right? And then you would put password. So we would pick age. So let's say 10. Assessment. So यहाँ पे आपको please select assessment में you have to choose start assessment for students, right? And when you go there, so okay, so what you have to do is 8 में, and then start assessment for students, and then here you will have to choose. Okay, so okay, so you can directly start from start here and then sign up. So here you will have to choose. Okay. So यहाँ पे you choose I am confused among various career options, and then you have to choose career assessment for 2nd to 7th, right? And then we have to choose multiple intelligence for class 2nd, right? So you अगर आप if your child is in like multiple अगर वो 6th में, so you can choose accordingly. So right now I'm selecting multiple intelligence career assessment for class 2nd students, right? And after that you have to just register yourself. Just wait few seconds and then you'll be done. So इस तरीके का बार यहाँ पे mention होगा registration has been done successfully. So all you have to do is now sign in. So I'll just put my email ID जो मैंने वहाँ पे mention करा था along with the password. So I'll log in. You can save password ताकि आपको बार बार enter ना करना पड़े, because ये आपका पूरा dashboard create हो चुका है, right? So now आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा. अगर आप फोन पे टेस्ट दे रहे हैं, अगर if you're operating from your phone, so just my test option, payment and report option इस side shift हो जाएंगे. So that is all you need to take into consideration. Otherwise the entire format would be same. So now you will just click into my test option.
This entire procedure is very simple, and you can definitely work with it without any glitch. So instructions: we are glad you are here to make your personalized career path. Close your eyes for 30 seconds and relax. So you just have to relax and make sure that your child is like sitting next to you, and make sure that you are just assisting him, not giving or providing them with answers, right? So we just start test. Right. So these are the instructions. They can read it, or you can just read it for them, or a number will be provided. So what you can do is that you can, call us, and we would be happy to help with the instructions and providing the professional help that we do. Right. So you just have to click into the start test option, and then the test will start in automatically. So these are the questions that will be coming in, and after the test finishes, the payment option will be coming, and then this is how the entire process goes. So after the test is given, a report would be generated. I'll be showing you what the report looks like, so that you can get a better idea of what or how it actually functions. Right. So this is the first page of the report, and yeah. So the first thing first, profiling would be done. That if they are aware about their career, or if they are aware about their own interest types. So if the student is confused, that will show what are the risks involved in terms of being confused. आगे हमें क्या करना है, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मेंशन है. उसके बाद आता है लर्निंग स्टाइल. सो लर्निंग स्टाइल में बच्चे को किस तरीके से सबसे अच्छे से याद रहती है चीजें लिख कर. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस स्टूडेंट्स इज बेस्ट विथ इसको लिखकर काफी सारी चीजें याद रहती है. एंड देन ऑडिटरी लर्निंग भी काफी हाई है, राइट. ओके. सो नेक्स्ट वुड बी कि हम जितनी भी लर्निंग स्टाइल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट को काफी सारी चीजें इफ ही लिसन्स, उसको ज्यादा रिटेंशन पावर में बेनिफिशियल रहती है. सो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज है. फॉर एग्जांपल वर्क, रीड, राइट नोट्स, रिसाइट इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर. ये सारी स्ट्रैटेजीज भी दी हुई है. So all these elements would help your child in making them academically strong. उसके बाद we have जो चीज हमने देखी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके बेसिस पे ये पूरा वेबिनार वी टॉक्ड अबाउट. नेचुरलिस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, विजुअल. सो जब आप ये टेस्ट देंगे, आपके बच्चा कौन सा सबसे ज्यादा उसका डेवलप्ड है, कौन से टाइप की इंटेलिजेंस इज द मोस्ट डेवलप्ड, उसकी सीरीज यू वुड गेट द इंटायर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इट. सो हमने जितनी भी टाइप के इंटेलिजेंस की बात करी, दिस विल बी योर ओन चाइल्ड्स पर्सनल रिपोर्ट. उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा. And we have already talked कि how it is going to help you in creating better connections, right? And about naturalistic में क्या क्या कौन सी सारी चीजें आती है, and then activities कौन सी कर सकते हो आप, and then career options कौन से available रहेंगे, and then visual के लिए भी कौन सी सारी elements that you need to consider, and same goes for bodily kinesthetic. And then we also have उनका aptitude किस तरीके का है. So that is also going to help us in understanding our children better. So this is the entire report that you would be getting to identify the multiple intelligence types along with their aptitude and their learning style. So if we look all in all, काफी सारी चीजें हमें हमारे बच्चों के बारे में अभी से ही पता चल जाएगी. अगर अभी से ही we help us students in creating a strong foundation that is going to enhance their academic interest in the fields that they like, and also how they want to go about it. So I hope you enjoyed today's webinar, and please feel free to ask any questions that you have in mind. Okay, so I'll be just looking at some of the questions right now.
Mm, yeah. So Miss Sunita wants to ask if like all the three would be coming in one report or not, like all the three things. Okay, so I'll just answer. We talked about this report demonstrate three things mainly, or rather four. Number one would be profiling, कि क्या कौन से स्टेट में है, if they are confused or not, so their profiling would be the first. Second would be their learning style, उनकी learning style क्या है, उनको किस तरीके से सबसे ज्यादा याद रहता है. सेकेंड वुड बी द मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप, जिससे हमने अभी तक पूरे डिटेल में देखा है. एंड थर्ड वुड बी द एप्टीट्यूड, कि उनकी क्षमता कितनी है. So this report would analyze or assess these four factors along with the multiple intelligence that we just saw. So yes, if you have any further questions, please visit our Together Mentor website, and feel free to ask any questions at any time. Thank you so much. We hope you enjoyed this webinar.